पिला माने द मच अवेटेड अवेती ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11 साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारानी सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू आउ पिला माने एई कोर्स रे आमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो बेसिक टॉपिक सब कवर करबा जहाँकि क्लास 11 साइंस रो पाठ बुझिबारे तुमको बहुत हेल्प करिवो तो आ वेट कौन कर वीडियो तल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अच्छी से क्लिक करके कोर्स पाई रजिस्टर करो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास Now let's move to our third method, that is rationalization method. Rationalization method. So first thing is, what do you mean by rationalization? Suppose √3 minus 1 divided by √3 plus 1 अच्छी ओके जदि हमें ऊपर तले दुई जगह √3 plus minus 1 और √3 minus 1 मल्टीप्लाई कलु आपको कहती रैशनलाइज करिबा माने रूट ओवर टर्म को रिमूव करिबा एटा पढ़ाई तो हमर ऑलरेडी रैशनलाइज so this will be kete hijiba √3 minus 1 ra square divided by √3 square minus 1 square तो डिनोमिनेटर हमारा रूट ओवर टर्म फ्री हिजिबा ओके तो ताकू कहंती रैशनलाइजेशन तो रैशनलाइजेशन मेथड रे हम एग्जैक्टली ए टाइप रे जिंस ही यूज करबा सो लेट अस टेक एन एग्जांपल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 square root of x plus 2 minus √2 divided by x. आपको रैशनलाइज करिबा तो रैशनलाइज करना को फॉर्म रे आसीबा ये 0/0 फॉर्म रे आसीला तो वी हैव टू रैशनलाइज अच्छा किए मते कहिबा रैशनलाइज कले हमें कोथरे मल्टीप्लाई करबा √x plus 2 minus √2 into √x plus 2 plus √2 कारण हमारा तळे कोनोसी रूट वाला टर्म नहीं तो ऊपर रूट टर्म को हम एठी रिमूव करबा सो दिस x into केते हबा √x plus 2 plus √2 सो ऊपर केते हे गला लिमिट ऑफ x tends to 0 न्यूमरेटर केते हिजिबा हमरा x plus 2 square root तारा square minus √2 रा square divided by x into square root of x plus 2 plus √2 so this will be limit of x tends to 0 x plus 2 minus 2 divided by x into square root of x plus 2 plus √2 so 2 cancel हे गला तो ऊपर कौन रहिला न्यूमरेटर रे कौन रहिला खाली x रहिला डिनोमिनेटर रे भी गोटे x अछि मैम 1 बाय यस ये x एबे कैंसिल हे जिवो so left is limit of x tends to 0 1 by square root of x plus 2 plus √2 एबे कोन करबा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दबो so this will be 1 by square root of 0 plus 2 plus √2 so 1 by 2 √2 this is your answer understood now let's move to next category हमें जनरली जते पॉलिनोमियल टाइप रो फंक्शन पाइला त हमें आइदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नाले फैक्टराइजेशन नाले रैशनलाइजेशन मेथड यूज करबा नेक्स्ट सम इंपोर्टेंट लिमिट्स you don't need to prove all those एटा तमे मैथ्स रे डिटेली प्रूफ करबा जस्ट लिस्ट डाउन द फॉर्मूलास
limit of first one is limit of x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a will be n into a to the power n minus 1. This is number 1. Number 2, limit of x tends to 0, sin x by x equals to 1. Third one is limit of x tends to 0, tan x by x equals to 1. Write down quickly. Limit of x tends to 0, cos x equals to किए कही परिबा केते हबो एटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रे आस जाउची cos 0 equals to 1. So this will be 1. Number 5, limit of x tends to 0, sin x tends to a, sin x minus a divided by x minus a equals to 1. Then number 6, limit of x tends to 0, 1 minus cos x divided by x equals to 0. Then number 7, limit of x tends to 0, a to the power x minus 1 divided by x equals to log e a. Next is limit of x tends to 0, e to the power x minus 1 divided by x equals to 1. Number 9, limit of x tends to 0, log x plus 1 divided by x equals to 1. Okay, so these are some important limits. You have to memorize this for the time being. जेतेबेले तुमको मैथ्स रे लिमिट्स पढ़ा हो सेतेबेले सबुरा डेरिवेशन सिखाबो. ओके, तो आपको अप्लाई करके किछि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर देबा ए जो लिमिट अप्लाई करके. So first one is write down limit of x tends to a, x plus 2 to the power 5 by 3 minus a plus 2 to the power 5 by 3 divided by x minus a. कौन करियो आमेगा को फॉर्मूला अछि x to the power n minus a to the power n. Yes or no? First जोड़ा पढ़ी थी Yes. ए फॉर्मूला अछि but directly नहीं. So for that what we'll do, we have to take, let us take x plus 2 equals to y and a plus 2 equals to b. Okay, so y केते इजबा x tends to a अछि, so x plus 2 tends to a plus 2, that means y tends to b. तमे जदी लिमिट को काहा को अप्रोच करूची एठी देखे बनी ताले भूल हिजबा जिंस. So it will be limit of y tends to b, y to the power 5 by 3 minus b to the power 5 by 3. अब जो x minus a अछि, x minus a equals to हमें कौन लिखि परिबा x plus 2 minus a plus 2. Okay, that means y minus b. Understood? Y minus b. That here हमारे n कहते, n is equal to 5 by 3 रोजी. So now it will be 5 by 3 n into a to the power. A माने कितने? b एठी. b to the power 5 by 3 minus 1.
according to formula कौन में n a to the power n minus 1 हुए कि नहीं? So it will be 5 by 3 d बदलने में कौन पुट करिबा a plus 2 a plus 2 5 by 3 minus 1 will be 2 by 3. So this is our answer. मु टिके कॉम्प्लिकेटेड वाला चूज कली ताकि अति इजी न करके टिके कॉम्प्लिकेटेड कर देले तमन को नेक्स्ट फर्दर बुझिबा को इजी हबो. Clear this type of question? Next is कौन अछि sin x. नेक्स्ट हम कोडा यूज करबा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x by x equals to 1. Okay, so let us take a question. Limit of mic बंद करो जा रही यूज होनी x tends to 0 sin 3x by 5x. ये मते आइडिया दी परिबा कौन हबो. सो जदी आमे sin 3x by 3x कर दबा आउ लिमिट ऑफ 3x tends to 0 कर दबा ताहले हम आंसर कोन हबो 1 हबो. अदरवाइज 1 हबन. So if x tends to 0 we can say 3x also tends to 0. Okay, जदी x 0 पाखा पाखी तो 3x भी tends to 0 कहि परिबा हमें. So what we'll do, limit of 3x tends to 0 sin 3x divided by 3x into 3 by 5. Now this line is clear. एटी कौन कोलु हमें 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई कर देलु अब 5 टा बाहर को नहीं गलु. अंडरस्टूड. So now this will be 3 by 5 कोन बा हमरा बाहर को आस जिवो कारण जते बेले हमें गोटे कांस्टेंट रे मल्टीप्लाई करू से बाहर को आस जाय. Then limit of 3x tends to 0 sin 3x by 3x. So this is equal to 3 by 5 into 1 equals to 3 by 5. A question रे का को डाउट अछि? Anyone? Anyone? No, ma'am. Okay. Now let us move to next question. Limit of x tends to 0 sin x into cos x divided by 3x. एठी हमें कोन fx into gx टाइप रो फंक्शन आछे देखि परछो. So first हमें कोन करिबा 1 by 3 बाहर को नहीं जिबा. Limit of x tends to 0 sin x by x into cos x. So this will be 1 by 3. जे जदी बुझी पल्लानी मझिरे मते पछरिबो 1 by 3 into fx limit of fx into limit of gx. So 1 by 3 आर वैल्यू केते हबा it will be 1. एबे पूरा फार्मूला पड़ी जा लिमिट ऑफ sin x by x x tends to 0 equals to 1 and cos x भी कोन हिजबा 1. So 1 into 1. So our answer will be 1 by 3. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अच्छा गोटे आमे एलएचआर आरएचएल केमती बाहर करबा तार क्वेश्चन सॉल्व करना. So let us take a question. Evaluate LHL
and RHL of fx equals to 1 plus x square if 0 less than equal to x less than equal to 1 and 2 minus x if x is greater than 1 at x is equal to 1 माने x is equal to 1 रे तमे LHL और RHL बाहर करो आउ लिमिट एग्जिस्ट होची कि नहीं देखो so first LHL equals to limit of at x is equal to 1 अछि तो x tends to 1 minus हमको नमक पड़ीबा केते जतबे x1 रु छोटा fx रो वैल्यू केते 1 plus x square एटा इंपोर्टेंट एठी जदी एठी साइड रे कंडीशन देइची एठी साइड रे कंडीशन दिया हिची तो दिस इज फॉर LHL because here x is less than 1 and this is for RHL because x is greater than 1 so it will be 1 plus x square okay so कौन करिवार अछि तमे जानछे x is equal to a minus h हाँ एठी a केते so this is equal to 1 minus h x is equal to 1 minus h when h tends to 0 so limit of h tends to 0 1 plus जोटी x अछि सेठी हमें कौन पकेबा 1 minus h square so केते हबो वैल्यू h is equal to 0 1 plus 1 square so it will be 2 understood next is RHL limit of x tends to 1 plus केते हबो एठी 2 minus x এই পার্টটা ক্লিয়ার না কোন পাই 1 plus x square নবা ও কোন পাই 2 minus x নবা समझते yes or no हाँ मैम Yes, ma'am. okay so 2 minus x ला RHL रे हम कौन करू x is equal to a plus h that means x is equal to 1 plus h and h tends to 0 so ये कौन ही जीवा this will be limit of h tends to 0 2 minus 1 plus h h0 okay x जगह रे हमें 1 minus h एठी पुट करूछु so value केते हबो 1 so it will be 1 so our LHL is equal to RHL or not equal to RHL is not equal to Equal. RHL equal केमती हला ये 2 नहीं हला नो नॉट इक्वल मैम गोटे 2 होगा ता लिमिट एग्जिस्ट करूची कि नाही करूनी ओके सो लिमिट इज नॉट एक्जिस्टिंग सो द एटा होची लिमिट पार्ट ओके लिमिट रे तुमको बहुत बेसी प्रैक्टिस दरकार क्वेश्चन रे यदि प्रैक्टिस करिबा देन इट विल बी क्लियर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बहुत टाइप रे क्वेश्चन अछि प्रैक्टिस कले क्लियर हे जिवो now let's move to continuity small part बेसी नाही okay continuity function is continuous when आमे लिमिट सिखिचु LHL सिखिचु RHL सिखिचु कहि पारु जतबेले LHL equals to RHL हुए and this equals to f of a that means continuous at x is equal to a गोटे फंक्शन अछि लिमिट ऑफ x tends to a fx is continuous if LHL equals to RHL equals to f of a तामाने जदि x square plus 1 अछि लिमिट ऑफ x tends to 0 एटा 1 रे कंटीन्यूअस कि नाही आमे LHL बाहर करिबा LHL केते हबो हमरा 0 plus 1 1 हबो RHL केते हबो 0 plus 1 1 हबो आउ f of
0 केते हबो 1 होची so in this case LHL equals to RHL equals to f of a hela so this function is continuous at x is equal to 0 बोली हमें कही था किंबा तमे जदी ग्राफ वाइज नेला this is the definition of continuity function continuous केते बेले गोटे पॉइंट रे केते बेले हबो जेते बेले लिमिट एग्जिस्ट करथबो त माने LHL equals to RHL हेथिबो आउ से LHL RHL रा वैल्यू एग्जैक्टली f of a माने से पॉइंट रे फंक्शन रा वैल्यू जेते हबा कथा सेते हेले हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हबो दैट मींस ग्राफ हम कोन नेथिलो at x is equal to a left hand limit एमती अप्रोच कला राइट हैंड लिमिट ए जगह रे अप्रोच कला बट कोन होतला एठी जाई कि से रहि जाउतला ओके एबे ए पॉइंट रे हमें पाई गलु f of a सो f of a भी हमें पाई गलु से मजी पॉइंट रे LHL अप्रोच करूची f of a को RHL अप्रोच करूची f of a को त कोन हला हम ग्राफ ता कोन हेगला बटे कंटीन्यूअस ग्राफ हेगला कि नहीं विदाउट एनी ब्रेक ताले हमें फंक्शन को कहूछु कंटीन्यूअस सो यू कैन आल्सो से if the graph of the function is continuous or if the graph of the function at a certain point जो point रे तुमको continuity proof करिवार अछि at a certain point have no breaks or no jumps माने continuous smooth जदी graph थिबा ताहाले हम function continuous हे जिबा otherwise we say that the function is discontinuous कार किछि डाउट रहिला कंटिन्यूटी ऊपर जदी लिमिट बुझिला ओके जदी लिमिट बुझिला लिमिट एग्जिस्ट करूथबा आउ सी एग्जैक्ट जो पॉइंट रे कंटीन्यूअस माने नै कि खाली गोटे पॉइंट रे पूरा डोमेन रे भी फंक्शन कंटीन्यूअस हेई पारे डोमेन माने कोन एक्स रा वैल्यू सो पूरा डोमेन रे जदी ग्राफ रे बिल्कुल ब्रेक बा बिल्कुल जंप हो नथिबो ताहले हम फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन otherwise we can say the function is discontinuous so discontinuity ra dita jinsa achi either limit does not exist and second either LHL equals to RHL is not equals to f of a तामाने लिमिट ता एग्जिस्ट करथबा बट f of a से जगह रे अलगा वैल्यू दोथुवा ताले फंक्शन कंटीन्यूअस नुहे ये हला पॉइंट रे जदी हमें गोटे इंटरवल नै जिबा a b इंटरवल ले पॉइंट केमती कंटीन्यूअस सॉरी a b इंटरवल ले फंक्शन केमती कंटीन्यूअस if a function is continuous at every point on the interval AB, then the function is known as continuous on the interval AB. माने each and every point A और B भितरे जेते point थिबा सबु point रे function continuous हेले जाएगी ये से interval ले continuous हबो closed interval ले कौन हबो closed interval ले a condition apply haba function is continuous at every point of on the interval AB plus ता संगरे कोन हबा continuous at A भी हेतिबा आउ B भी हेतिबा ता माने this condition satisfy कला परे next condition थिबा continuous at A from the right side कोन पाइना जदी A अछि एठी आउ B अछि एठी ये A रो राइट साइड रो कंटीन्यूअस होतबा B रो लेफ्ट साइड रो कंटीन्यूअस होतबा
continuous at A from right side. That means limit of x tends to A plus fx should be equals to f of A. Our next case कौन होगा? Continuous at B from left side. Right को गले आम interval बाहर को चल जीवो. That means limit of fx x tends to B minus equals to f of B जदि हेतुवा. So closed interval रे ए तीनटा condition satisfy करिबा. माने A रु B भितरे सबु point रे continuous हेतिबा, A रु right side रो continuous हेतिबा, B रु left side रो continuous हेतिबा. आउ open interval रे each and every point रे से continuous हेतिबा दरकार. So do you have any doubt in continuity? Any doubt? No, ma'am. Okay, very good. So केते गुडा typical function अछि तमरा सबो point रे से continuous everywhere. Continuous everywhere. जेमति कि तमर constant function माने fx is equal to c सबु जगह रे continuous कारण ग्राफ केते बेले ब्रेक परिबनी. कंटीन्यूअस केमती जतबेले ग्राफ ब्रेक होइनी. तमे जदी गोटे सिंपल स्टेटमेंट बुझिया को चाहू जो फंक्शन रा ग्राफ ब्रेक होनी को पॉइंट रे से सब जगह रे कंटीन्यूअस. आउ गोटे फंक्शन रा कोन मझी रे गोटे जगह रे ग्राफ ब्रेक हे जिवो किंतु किछि पर्टिकुलर जगह रे ग्राफ ब्रेक हबनी. तो जोठी ब्रेक होनी सेही पॉइंट रे कंटीन्यूअस, जोठी ब्रेक होजी सेही पॉइंट रे डिसकंटीन्यूअस. constant function हेगला आ तापर तमन हेगला आइडेंटिटी फंक्शन fx is equal to x. तमने केमती तम ग्राफ एमती मझी रे जाय ये केतबेले ब्रेक हबनी. So that is continuous. Next होची जेते polynomial function माने fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to an x to the power n. Then fx is exponential function is also continuous everywhere. Fx is equal to a to the power x when a greater than 0 and e to the power x. Dita jagah re ye hochi continuous. Then sin x and cos x also. कि जो भी trigonometric functions सब होची सब trigonometric functions are continuous at its domain. केवल domain part रे समाने continuous है. ए सब जिंस गुडा केते गुडा मने रखा डायरेक्ट क्वेश्चन आसले तमे समय नष्ट न करी continuous discontinuous करि परिबो. Okay, so shall we end the class कि आउ किछि examples solve करिबा. Okay, so that's all for today. Limits and continuity. Dita को जिनसा पढ़िला. So ये जो dita chapter तमा calculus रा base है dita. Function हमें continuous कहीं check करूचु कारण जदि continuous function है नथिबा तार differentiation हमें करि परिबानी. और differentiation और integration न कले हम main काम हमारे aim differentiation और integration. So continuous function हेले ही से गोटे differentiable function हबा. सेटा हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी. तो एई सब लिमिट कोन पई पढिलो कारण लिमिट एग्जिस्ट कले ही फंक्शन कंटीन्यूअस हबा. कंटीन्यूअस कोन पई पढिलो कि कंटीन्यूअस हेतिले डिफरेंशिएबल हबा. तापरे डिफरेंशिएबल हेतिले डिफरेंशिएशन करबा. गोटे गोटे स्टेप हे के आसिला. सो अप टू दिस पॉइंट क्लियर. क्वेश्चंस तुमको दे दिया हबा प्रैक्टिस करो. Okay, so that's all for today.